प्रेक्षकांसमोर भरपूर अपेक्षा असतील. अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू, त्याचबरोबर कल्पेश गावस, दीपराज गावस आणि सुपरमॅन समर्थ गावस या खेळाडूंकडून भरपूर अपेक्षा असतील आपल्या लाडक्या खेळाडूंकडून या ठिकाणी तमाम क्रीडा रसिकांना. आणि त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूने मात्र हल्लीच एक मोठी स्पर्धा जिंकली कुडचोड येथील स्टार बॉयजचं एक सुंदर आयोजन आणि ती स्पर्धा जिंकत गुमटेश्वर या ठिकाणी मडगाव क्रिकेट संघ त्याच जोशात त्याच ईर्षेने मैदानात उतरलाय याही स्पर्धेत. आणि पहिली सामना या ठिकाणी सहज जिंकत दुसरा सामना या दोन संघादरम्यान होतोय. गोलंदाजीत सज्ज होतोय अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू, एक अष्टपैलू खेळाडू या संघातील. आणि समोर मात्र विराज आणि विराजच्या सोबतीला डावकुरा फलंदाज संकेत मोरजकर हा डावकुरा फलंदाज. 6 षटकांचा सामना होतोय. एक सुंदर आयोजन शिवछत्रपती चषक. पहिला चेंडू ओव्हरपिच चेंडू, एक ताकदीने मारलेला फटका, मोठा फटका, उत्तुंग फटका, डीप लॉंग ऑफला चेंडू, षटकार, 6 धावा विराजच्या बॅट मधनं. डीजे फलंदाज गुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघ षटकारानं 6 धावांवर आपल्या आणि आपल्या संघाचं खातं सुरू करतोय. पुन्हा एकदा एक सुंदर फटका, हवे चेंडू, मिळापला झेल टिपला जातोय. पहिला हादरा बसतोय गुमटेश्वर क्रिकेट संघाला. या चेंडूत ओव्हरपिच चेंडू, ताकदीने मारलेला फटका परंतु मिस टाइम फटका आणि मिळापला झेल टिपला जात पहिला हादरा हा गुमटेश्वर क्रिकेट संघाला बसतोय. सबके अण्णा उर्फ सर्वण्णा मैदान पर. सर्वण्णा नवीन फलंदाज, 1 डाऊन, पिंच हिटर. अविनाश गावस आपल्या बॉलिंग मार्कवर या ठिकाणी पहिल्या चेंडूवर षटकार बसल्यानंतर या ठिकाणी एक महत्त्वाचा अडसर दूर करतोय विराज. यापूर्वीच्या मॅचमध्ये ज्याने 4 चौकार ठोलत अष्टपैलू खेळ केला होता तो विराज या मॅचमध्ये मात्र वैयक्तिक 6 धावांवर बाद होतोय. फुलटॉस चेंडू, एक सुंदर कव्हरला फटका, जेल उडायला, जेल टिपला गेला पाहिजे होता परंतु जेल सुटतोय. एक फुलटॉस चेंडू, कव्हर ड्राईव्हचा फटका, एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक, चेंडू हातातून झेल निसटतोय आणि एक जीवदान मिळतंय आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवर. सर्वांना एकेरी धावेनं 7 अशी धावसंख्या, 1 गडी बाद. पहिलं षटक जे पॉवर प्लेचं. समोर मात्र सज्ज होतोय तो डावकुरा फलंदाज संकेत मोरजकर. अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू गोलंदाजाचा सामना करतोय. चांगला चेंडू सन्मानजनक खेळून काढतोय. फॉलो थ्रू मध्ये सुंदर फिल्डिंग. थोडक्यात या ठिकाणी मी म्हणेन की नेम चुकतोय. बॅकअप होतोय मिड ऑनला, धाव काय मिळत नाही संकेतला. एका बाजूनं चांगली सुरुवात गुमटेश्वर, पहिल्या चेंडूत षटकार, त्यानंतर नावेली क्रिकेट संघ कमबॅक करतोय, एक गडी बाद करतोय. विराजला तंबूचा रस्ता दाखवला जातोय आणि नवीन फलंदाज सर्वांना आलाय मैदानात. डावकुरा फलंदाज संकेत मोरजकर स्ट्राईकला सामना करतोय. कट करतोय चेंडू, थर्डमॅनला क्षेत्ररक्षक, एकेरी धाव. एकेरी धावेनं संकेत आपलं खातं सुरू करतोय आणि एकंदरीत धावफलक पुढे सरकतोय. तो टोटल 8, 1 गडी बाद. गुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना. सामना 6 षटकांचा. दोन्ही तुल्यबळ संघ दुपारच्या सत्रात आमने सामने. एक स्लोअर 1 परंतु सुंदर फटका, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू. चेंडूचा पाठलाग खेळाडू करतोय. बघूया त्या अगोदर चेंडू या ठिकाणी 2 धावा आणि बहुतेक या ठिकाणी 3ऱ्या धावेसाठी प्रयत्न मैदानात दिसतोय. जोपर्यंत स्क्वेअर लेग बाउंड्रीवरनं फेक होते
3 बहुमल्ल धावा या ठिकाणी हे दोन्ही फलंदाज या ठिकाणी जमा करतायत. 3 धावा धावसंख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करते 12. एक गडी बाद 12 अशी धावफलकावर पहिलं पॉवर प्लेचं षटक अविनाश गावस्वर डब्ल्यू गोलंदाज. 11 धावा, माफ करा, पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 11 अशी धावसंख्या, एक गडी बाद. वैयक्तिक 6 धावावर बाद झालाय विराज आणि विराजच्या जागी आलाय फलंदाज तो संकेतला साथ देण्यासाठी सर्वांना. गोलंदाजीत बदल होतोय, बहुधा सज्ज होतोय तो फिरकी गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध कल्पेश गावस हा गोलंदाज सज्ज होतोय. कॉलेज एंड कडनं या ठिकाणी आपल्या बॉलिंग मार्कवर वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचं दुसरं षटक टाकण्यासाठी. शिवछत्रपती चषक 2021 शिव मराठा स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब यांच्या वतीनं आयोजित 40 संघ सहभागी झालेत. सलग 5 दिवस एक क्रिकेटचा महासंग्राम सुंदर अशा या नावेलीम पंचायत मैदानात या ठिकाणी मैदानात पण भरपूर प्रेक्षक आणि त्याचबरोबर यूट्यूबला पण भरपूर प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद लुटतायत. कट करतोय ऑफसाईडला एक सुंदर पटका, लेग ब्रेक चेंडू कव्हरला क्षेत्ररक्षक. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावेनं 12 धावा. गुमटेश्वर बडगाव क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करतोय आणि डावखुरा फलंदाज सज्ज होतोय तो संकेत मोरजकर स्ट्राईकला. कल्पेश गावसच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी. क्षेत्ररक्षणात बदल होतोय. डीप स्क्वेअर लेग कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर डीप मिडविकेटला खेळाडू तैनात दिसतो. एक डीप लॉंग ऑनला बाउंड्री लाईनला संकेत मोरजकर स्ट्राईकला. सुंदर फटका करतोय चेंडू फाईन लेग बाउंड्रीच्या दिशेनं. चेंडूच्या मागे क्षेत्ररक्षक, त्या अगोदर मात्र बहुधा अगदी बाउंड्री लाईनला चेंडू रोखला जातोय आणि जोपर्यंत परती होते त्या दरम्यान 2 बहुमल्ल धावा हे दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एक चांगला फटका फाईन लेग बाउंड्रीच्या दिशेनं. कदाचित संकेत वाट बघत होता, चेंडू सीमा पार जातोय परंतु सरते शेवटी शेवटपर्यंत चेंडूचा पाठलाग बघायला मिळाला आणि अतिशय सुंदर फिल्डिंग ही मैदानात दिसते ती शिव मराठा नावेलीम क्रिकेट संघाकडून. आता मात्र एक सुंदर टोला डीप फाईन लेगला चेंडू जातोय फाईन लेग सीमा रेषा पलीकडे. चौकारासाठी 4 धावांसाठी डीजे. यष्टीरक्षक हेल्मेट मागवतोय. क्लोज किपिंग या ठिकाणी मैदानात दिसते त्याची. गोलंदाज फिरकी गोलंदाज कल्पेश गावस. राईट आर्म राऊंड विकेट समोर डावकुरा फलंदाज संकेत मोरजकर. नॉन स्ट्रायकर इनला सर्वांना. एकमेव गडी तंबूत परतलाय तो गुमटेश्वर क्रिकेट संघाचा विराज. आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न. चेंडू यावेळी मात्र बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. धावफलक एकंदरीत टोटल स्कोर 18, एक गडी बाद. 18 लॉस ऑफ 1 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. राईट आर्म राऊंड विकेट कल्पेश गावस पुन्हा एकदा सज्ज कॉलेज एंड कडनं. कट करतो बॅकफुटला जात सुंदर फटका. चेंडू जातो तो डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं. बाउंड्री लाईनला पार या ठिकाणी चेंडू सीमा पार. चौकार 4 धावांसाठी. लॉस ऑफ 1 विकेट. 22 लॉस ऑफ 1 विकेट. चौकार षटकार अवघड झेल. रिप्ले जरूर यूट्यूबला तुम्ही बघू शकता या स्पर्धेत. ओव्हरपे चेंडू सुंदर फटका डीप लॉंग ऑनला संकेत मोरजकरच्या बॅट मधून आणखी 4 धावा.
गाव क्रिकेट संघ मैदानात करतोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात होते. तिसऱ्या षटकात सर्वांना स्ट्राईकला सज्ज होतोय. बॉलिंग मार्कवर स्वतःचं दुसरं कॉलेज एंडकडनं सज्ज होतोय तो अविनाश गावस उर्फ डब्ल्यू. अष्टपैलू खेळाडू गोवा पोलीस क्रिकेट संघाचा, भरपूर अनुभव क्रिकेटचा. गोवा क्रिकेट बरोबरच कराड, पुणा, सातारा, मुंबई परिसरात भरपूर क्रिकेट. ओव्हरपिच चेंडू, एक सुंदर कव्हर ड्राईव्हचा देखणा फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरला, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीला. 2 धावा दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. 2 धावा धावफलक दुहेरी धावेनं 28 माफ करा 28 लॉस ऑफ 1 विकेट, 28 रन 1 विकेट पर. तिसरं षटक स्वागत, पहिल्या चेंडूवर चौकार. एक स्लोअर वन, परंतु अतिशय सुंदर फटका. लॉंग ऑनला चेंडू झेल हातातून निसटतोय आणि सुटलेला चेंडू या ठिकाणी षटकाराच्या बाहेर. मिळतायत 6 धावा. बघा रिप्ले मध्ये युट्यूबला कसं काय घडलं या चेंडू दरम्यान. चांगला चेंडू, पुलरलेनचा चेंडू ऑफ स्टंपवरचा, नो मॅच लँड मध्ये सिली मिडॉनला एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. ज्यावेळी झेल सुटला त्यावेळी अविनाश गावस गोलंदाज खूप निराश झाला. झेल टेपले गेले पाहिजेत या मॅच मध्ये. अतिशय सुंदर आउटफील्ड नावेलिम पंचायत ग्राउंड या मैदानात. क्षेत्ररक्षकांना खूप संधी चांगलं क्षेत्ररक्षण करण्याची. त्याच दरम्यान एकेरी धाव, डावखोरा फलंदाज संकेत मोरजकर स्ट्राईकला आणि गोलंदाज अविनाश गावस. मिड विकेटला अदलाबदल होते खेळाडूंची या ठिकाणी. डावखुरा फलंदाज स्ट्राईकला आल्यानंतर डीप मिड विकेट बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या अगदी डाव्या बाजूला या ठिकाणी खेळाडू. सुंदर फटका बॅकफुटला, एक स्क्वेअर कटचा देखणा फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीला. एकेरी धाव, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, परंतु शेवटच्या क्षणी मात्र नकार येतो या ठिकाणी स्ट्राईक एंडवरनं. नक्कीच चांगला निर्णय, अचूक फेक होती यष्टीरक्षक समर्थ गावसच्या दिशेनं. त्याच दरम्यान मात्र 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि एकेरी धावेबरोबर 36 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट, 36 गडी बाद. तिसरं षटक अविनाश गावस वैयक्तिक दुसरं षटक गोलंदाजी करतोय. ओव्हरपिच चेंडू, एक सुंदर फटका डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, गगनचुंबी फटका, चेंडू सीमा पार जातोय स्क्वेअर लेगला. पंचांचा इशारा, षटकार, 6 धावा. बरोबरच 6 धावांची भर धावसंख्येत पडते. 42 टोटल, 42 लॉस ऑफ 1 विकेट. पुन्हा एकदा उडवलाय मोठा फटका, बघूया चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, झेल टिपतोय, दुसरा हादरा बसतोय घुमटेश्वर बाडगाव क्रिकेट संघाला. सर्वांना बाद होतोय दुसऱ्या गड्याच्या स्वरूपात. सज्ज होतोय टीमचा विकेट कीपर बॅट्समन मतीन खान हा मैदानात सज्ज होतोय. या स्पर्धेचा शिवछत्रपती चषक शिवमराठा स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब, एक सुंदर असं मैदान, जे क्रिकेटसाठी मैदान हवं ज्या प्रकारचं तसंच मैदान
असं हे मैदान नावेलीम पंचायत ग्राउंडचं. नवीन फलंदाज मतीन खान आणि येणाऱ्या कालावधीत आणखी 2 स्पर्धा मोठ्या होत आहेत. SK जॉगिंग श्री बोडगेश्वर मैदानात आणि त्याचबरोबर मांद्रेम चॅम्पियन ट्रॉफी ही एक मोठी स्पर्धा याच महिन्यात संपन्न होते. डावखुरा गोलंदाज टॉपेजला लागतोय, चेंडू यष्टिरक्षकाच्या मागे, सुंदर फिल्डिंग, शॉर्ट फाईन लेगला, एकेरी धाव. मतीन खान आले आले आपलं खातं उघडतोय, धावफलक पुढे सरकतोय. 43 लॉस ऑफ 2 विकेट. समोर फलंदाज संकेत मोरजकर, डावी उजवी जोडी ही मैदानात गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. या ठिकाणी दीपराज एक वेगवान गोलंदाज. लेदर क्रिकेटच्या स्पर्धेत हल्लीच्या या 2-3 वर्षात हा खेळाडू भरपूर चमकदार कामगिरी करतोय. आपल्या गोलंदाजीनं एक भन्नाट वेग, सुंदर अशी ॲक्शन या गोलंदाजाची. दीपराज गावस आपल्या बॉलिंग मार्कवर आता मात्र सज्ज झाला. या ठिकाणी लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय. समोर डावखुरा फलंदाज संकेत मोरजकर. ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू सोडून दिला जातोय. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, अवांतरचा इशारा होतोय. आणखी एका धावीची भर धावसंख्येत पडते ती गुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघासाठी. पुन्हा एकदा पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. पुन्हा एकदा वाईड बॉलचा इशारा होतोय. आणखी एका धावेची भर ही धावसंख्येत पडते. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 पर पहुंचा. 2 विकेट पर दीपराज गावस अपने लाइन पर थोड़े से भटक रहे हैं. बॉलिंग मार पर एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. कट के इस बार हवा में थोड़ा सा शॉट और फील्डर को चकमा देती हुई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ निकली. 1 रन दूसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज. जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में 2 रन जुड़ते हुए संकेत के स्कोर के खाते में और 2 रन मिले गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में. लोअर फुल टॉस के इस बार ड्राइव करना चाहते थे, ठीक से संपर्क नहीं, बल्ले से निचले हिस्से से लगी. विकेट कीपर समर्थ गावस तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, रन की संभावना को समाप्त कर दिया. 6 ओवर का मैच मुकाबला मैदान पर और ओवर चलता हुआ टोटल चौथा ओवर. अर्जुन हमारे साथ स्कोर चार ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर समाप्त हुए. गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रहे, टोटल 55 रन. आने वाले 2 ओवर का 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी. ये मैच 6 ओवर का है
और देखना होगा 12 गेंदों में घुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम कितने रन माला लेती है। बॉलिंग में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं एक बार फिर से प्रतीक आमोणकर के साथ आगे का हाल सुनाते हुए। आइए प्रतीक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। So after 4 overs, score is 55 runs. Looks like Kumteshwar Badgaon are moving towards a massive score. Short ball here. And that has been dispatched over the longest square boundary. What a shot that is. It's a maximum. What a way to get going. Score moves on to 61 runs. Matin Khan, who failed in the first match, got out to just 2 runs, is now looking in some serious touch. 6 to start off. Sidhu. Oh, that's played wonderfully in the gap. And they're running for a second run as well. This is wonderful running between the wickets. Great running between the wickets here. Sanket, he was running at the danger end. And wonderful running between the wickets. They're playing in the very humid conditions. This is the summer. Oh, big swing, oh. And that will be a run out. Sanket reached at the striker's end. But the batsman, Mateen, was unmoved. And Sanket has to depart. Was looking good, but has to depart off the run out. Last 2 overs remaining. Naresh is the new man in. He's just walked in. That's played in the air and in the gap. Through the cow corner. And it's a 6. It's a 6, in fact. What a shot. This is wonderful batting. Absolutely top-class cricket from Mateen. Third 6 for him in this over. And how easily does he clear those big boundaries? Well, this is poor bowling. Poor bowling, I must say, from the bowler. If you are a turner of the ball, you can't bowl over pitched. Short ball this time. It's in the gap, but should be just a single. In fact, they will get 2 runs now. Another misfield. The fielding has been a major concern here in this match for the side of Shiv Maratha Navelim. Normally, a very good fielding unit. We saw a couple of catches going down. Avinash Kavas is a very good fielder. Absolutely acrobatic. He dropped a catch.
As you can see, the batters of Kumteshwar Vadgaon have been batting wonderfully. Score moves on to 77 in 5 overs. So the batsmen of Shiv Maratha Navelim will have to come out very strong. They have a very good batting lineup, but this over needs to be contained. Oh, over pitched. And it's the longest boundary. And great save. Great save. He certainly saved a 6. Excellent fielding effort there. Saved 4 runs for his side. Just a couple of runs. Still do not understand the reason why the bowlers are going over pitched. It's the longest boundary there. Oh, great comeback. Wonderful comeback here. It was a quicker delivery this time. He's mixing up pretty well now. Just 2 runs off the first 2 deliveries. Naresh, the man on strike. Mateen is at the non-striker's end. Siddharth bowling left arm. Once again, that should be taken. Oh! Am I seeing that? Second catch put down. That was an absolute sitter for Avinash. Second catch that he has put down. A very, very rare sight. But that hasn't cost them much. Just a single. In fact, that is the 4th catch that has gone down. 1 catch was popped off and it went for a 6 on the long on boundary. That's played beautifully inside out this time. And that should be cut away. Should just be a couple of runs. As we can see, Samarth Gava's backing up. Just a couple more. Added to the tally. This is good bowling. Low full toss outside off will help. Because the batsman is looking to slog now. And once again, another very good... Oh, it's a wide ball. It's been called as wide by the umpire. And score moves on to 8. Quicker delivery and should just be a single. Another single. Score moves on to and another shot played along the carpet. A slight fumble again there, and that will allow them to take another run. And the final score moves on to 86 runs, the highest score of the day so far. It's a massive target, 87 to win for Shiv Maratha Navelim. It's a massive target posted here. Well played, Kumteshwar Vadgaon. Not too early to judge. We still have second innings. Shiv Maratha have the likes of Samarth Gavas, W, Sahil Gavas, Deepraj Gavas. Plenty of batting to come. And the kind of lineup that they have, they certainly would believe that they can get through that mark of 87 runs. It is the home ground for Shiv Maratha Navelim. As we can see, this wonderful tournament being organized by Shiv Maratha Sports and Cultural Club. The first All Goa Panchayat and Municipality level tennis ball cricket tournament. Shiva Chhatrapati Chashak is the trophy
All the 40 teams will battle for. So we can see wonderful flags, the saffron flags waving around across the ground. A nice, wonderful breeze blowing on this beautiful ground. The Navelim Panchayat ground. I would also like to take some time in appreciating the Sports Authority of Goa staff, the groundsmen who have made this ground, made this wonderful pitch, the pitch curators, namely Prakash Navelkar, Bhim Singh Vantamuri, Dharma Mashelkar, Kushta Gavas, and Sham Sundar Naik. They put in all the efforts to make this wonderful pitch and a great outfield. It's all green. This outfield has done nothing wrong so far. It's lightning quick outfield here. As we move into the second innings of the match. 87 to win for Shiv Maratha Navelim. It's a huge target. .87 to win. They need to score at 14.5 runs per over. So almost 15 runs every over. They need a couple of big strikes almost every over. Kurushan will open the bowling attack. And once again, the same two openers, W and Sahil. Oh, he has gone big. How big? Is it big enough? Yes, it is. What a strike here. What a start to the innings. A wonderful strike here from W to get going. You'll have to play with that kind of confidence. He has hit it with the wind. And a massive six to start the innings. They need a few more of those every over. Shiv Maratha Navelim to get to that target of 87 runs. It's a wonderful strike here. A great start to the side of Shiv Maratha Navelim.
Avinash Kavas will have to play a long innings here. Oh, he'll make it 2 in a row. What a strike! That has gone miles. High and handsome. What a way to get going here for Avinash. What a flying start here for W. And the bat has been struck on the wicketkeeper. That was struck powerfully. That was struck with extreme power. And looks like the wicketkeeper is in sort of a trouble here. One can imagine where the ball has reached. One can imagine the amount of power that was applied on the bat swing. Wicketkeeper resisting that kind of a bat swing. One can imagine the amount of pain he must be going through. Very unfortunate. Good to see the wicketkeeper back in action. He's standing close to the stumps. And a very good decision from the umpires. Oh, that's gone up in the air once again, and it's a 6. He'll make it 3 in a row. What a start. What a start here for Shiv Maratha Navelim. It's a wonderful start. It's 3 in a row here for Avinash Kavas, W. That's what I was talking about. It is very important for him to stay there till the very end. He's got 18 runs already off the first 3 deliveries. And you can see the bowler, Gurushan, is already under pressure here. 3 massive 6s. Avinash Kavas playing on his home ground is well aware of all the conditions, the wind direction. He's taking the full advantage of all the conditions. Oh, that's played beautifully through the covers this time. Absolutely no chance for the fielder to stop that. It's a boundary through covers this time. Score moves on to 22 runs. What a start. What a flying start here for Shiv Maratha Navelim. Score moves on to 22 runs. Quality batting here from Avinash Kavas. This time a good comeback. Wonderful comeback from the bowler Gurushan. A Yorker delivery. Avinash knows that he has already got the runs of this over. He defends it. Doesn't do anything extra with that Yorker delivery. Respects a good delivery. Last ball coming up. Once again over pitched. And that will just be... Oh, in fact, they run 2. This is very good running between the wickets. Wonderful running between the wickets. Sahil Kavas and W. A flying start here. 24 runs coming off the very first over. Great start for Shiv Maratha Navelim.
Akshay, skipper of the side, into the attack. Short ball up in the air and just short of the fielder at covers. Looked like a short delivery outside of Sahil Gawas, looking to play across the line and just survives. Wonderful delivery here from Akshay, the skipper of the side, Gumteshwar Madgaon. And once again, W back on strike. It's a Yorker and runs off the bat. Yes, no signal from the umpire. It's a good start here for Akshay. A quicker, good line delivery to Sahil, followed by a Yorker delivery to W. He hasn't given away anything so far for the batsmen to free their arms. Once again, another quicker delivery. And that will just be another single. Well, this is turning out to be a very good over so far. Just 3 runs off the first 3 deliveries. It's exactly 2 p.m. on my watch. One can imagine how tough the conditions are out there at the middle. Another Yorker line delivery, but this time he has crafted that one beautifully. And wonderful work there by Guru Shan to keep it down to just 2 runs. Score moves on to 29 runs. Again, swing and a miss. Gets off the bat. W was slightly late this time. And it's a wide and extras. These are all bonus runs here. That was needed. That certainly was needed. This was turning out to be a very good over for Gumteshwar Madgaon. One mistake from the bowler, the skipper, has given them 5 extra runs. So that makes up for Shiv Maratha Navelim. Score moves on to 34 runs now. They've got the runs of this over as well. With last ball still to be bowled. Oh, that's up in the air. And taken. Safe pair of hands at the long on region. And the first wicket going down. And a big one. W was looking dangerous. They picked up a huge wicket of W. Smashed 3 sixes and a boundary in the very first over. And he has to take a long walk back to the pavilion. Still game on here, 34 for 1 after the 2 overs. And Samarth Gaus walks out to the middle now. And we all know what he's capable of doing. The home side will have a lot of hope and they will rely a lot on this man, Samarth Gawas. He will be a key man here for Shiv Maratha.
Score is 34. Sanket introduced into the attack. He's up against Sahil Gavas. He's just faced couple of deliveries, couple of singles for him. He needs to get going as well. That's up in the air, but will fall safely. Should just be a single. Sanket Korgaonkar is a bowler. Starts off with a single. Good delivery, in fact. Bowled with a lot of pace. And Samarth Gavas, the Superman Gavas, is on strike now. The entire villagers of Navelim watching this game of cricket. So we can see plenty of YouTube viewers as well witnessing Samarth Gavas on strike. Sanket to Samarth. Here we go. Wonderful stroke from him. A Yorker delivery once again. And that should just be a single. Beautiful delivery once again from Sanket Korgaonkar. Couple of deliveries right in the block hole. The third over in progress here. And this time Sahil looks like he was coming down the track. And he was back safely. A very good call there from Samarth Gavas. And what a shot. That's gone over. 4-6 here for Samarth Gavas. He gets going. The Superman has arrived. And you can't be doing that. Well, this is poor work. It's a byes boundary. What should have been a dot ball has been converted into another boundary. Now 2 byes boundary they've got. These are all bonus runs. And you've got to blame the wicketkeeper for that. Game on here. Oh, that's straight up, straight up. And the wicketkeeper does nothing wrong. It's a big wicket. It's a huge wicket. And second failure here today for Samarth Gavas. The Superman walks back with just 1-6. And that will take a massive turn. The hopes of Shumaratha Navelim. It's a big wicket. Samarth Gavas walking back.
Still, I must say it's a very good total. 47 runs on the scoreboard, still 40 to get. It is still chaseable. Still have got plenty of batsmen. Sahil Gavas is still out there. Somnath walks out to the middle. Deep Raj to follow next. Somnath walks out to the middle to join Sahil, another right-handed batsman. Varad Dabholkar will be bowling the fourth over. 3 overs gone. Score 47 for 2. 2 big wickets. W and Superman Gavas back in the hut. Still another 40 runs to get from 18 deliveries. It's a short delivery. And Sahil has been trying a lot to play that switch hit. He hasn't been able to connect one so far. It was a short delivery. He is normally a very good puller of the cricket ball. Likes to pull, hook. And a warning given to the fielding side. We've got to finish it off in 25 minutes. 25 minutes is all you have. That's what I was talking about. When you can pull the ball so well, why would you go for that reverse switch? It's a boundary here to Sahil. He gets going. 16 balls. Looking pull shot here from Sahil Gavas. Now they're appealing. The bowler not interested. Bowler showing absolutely no interest in that appeal. And another dot ball. They need to go at almost 13 runs every over. Still 36 to get. That's read well. And it's a boundary. It's a boundary here. Another boundary here for Sahil Gavas. This is good batting. Varad back on his bowling mark. Oh, this time he connects. He connects one this time. And it's a monstrous strike here from Sahil Gavas. What a shot. He needed that confidence. Those couple of boundaries must have boosted his confidence. And it's a massive save. .26. This time change of pace, working in favor of bowler.
12 गेंदों का और 12 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 26 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अपने घर के मैदान पर शिव मराठा नावेलिम क्रिकेट टीम। 87 का टारगेट, एक लंबा सफर पीछा करते हुए, चेस करते हुए, जवाब देते हुए 2 ओवर सिर्फ बाकी, 12 गेंदों का खेल, मैच को जीतने के लिए 26 रन। पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए गुरुशंत उर्फ मेंडिस खुद का दूसरा ओवर लेकर, और टीम के ओर से 5वां ओवर कॉलेज एंड से 2 ओवर 12 बॉल्स 26 रन, 12 गेंदों में 26 रन। गुरुशंत राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। फुल टॉस गेंद इस बार बल्ले के बीचों बीच, एक सुंदर शॉट, कवर ड्राइव का डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर पहला रन तेजी के साथ दूसरे के लिए पलटे, और अंपायर का इशारा जो कि थर्ड अंपायर की ओर। 2 रन देखना होगा क्या हुआ, किस तरह से हुआ। एक बार फिर से जुड़ जाते हैं जो कि हमारे थर्ड अंपायर के साथ। इसके साथ एक और विकेट खोती हुई शिव मराठा नावेलिम क्रिकेट टीम। बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो, अच्छा कलेक्ट किया गुरुशंत ने, और वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को आउट कर, तो 1 ही रन मिलेगा स्कोर के खाते में। 62 पर पहुंचा टोटल स्कोर शिव मराठा नावेलिम क्रिकेट टीम का। एक बहुत ही शानदार फील्डिंग गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम की ओर से, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री। कल्पेश गावस जो मैदान पर, 25 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। ओवर चलता हुआ 5वां, गुरुशंत अपने बॉलिंग मार्क पर आउट होकर वापस बल्लेबाज निकलते हुए। साहिल गावस बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, एक छक्का लगाया था, 2 चौके लगाए थे अपने इनिंग में, और रिवर्स का जो कि स्विच हिट का प्रतीक छक्का लगाया था। बहुत ही बेहतरीन शॉट था आज के दिन का। और कल्पेश गावस नए बल्लेबाज मैदान पर, फिलहाल स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कल्पेश का साथ देते हुए सोमनाथ, और गुरुशंत अपनी बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। और पेज गेंद इस बार लॉफ्ट किया बड़े खूबसूरती के साथ, और शानदार फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, एक सही पूर्वानुमान। 2 रन जुड़ते हुए स्कोर के खाते में, लेकिन लगभग 2 रन भी बचाए अपने टीम के लिए। अगर मैच चला गया आखिरी गेंद पर तो इस तरह से फील्डिंग बहुत काम आ सकती है मैदान पर। 2 रन और जो कि बढ़ते हुए स्कोर में, और इन 2 रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ 64 रन पर 64 टोटल स्कोर। शायद गेंद सीधी जो कि उंगली पे टक लग चुकी है। अक्षय जोगले जो कि वापस आते हुए, और उनके जगह पर जो कि सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी फील्डिंग के लिए मैदान पर दिखाई देता हुआ। सुंदर शॉट, बेहतरीन शॉट, इन पिक्स और बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। हाफ वाली पर लेकर एक नजाकत भरा कवर ड्राइव का बेहतरीन शॉट 4 रन के लिए। बहुमूल्य रन स्कोर में 68 रन पर पहुंचा
या टोटल स्कोर 68। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ मैदान पर। गुरुशन अपने बॉलिंग मार्ग पर थोड़े से आज इस मैच में महंगे जरूर साबित हुए। बहुत ही शानदार एक शॉट कवर ड्राइव का डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। इस बार और एक बड़ा शॉट, लेकिन सीधा लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर के हाथों में। लंबी बाउंड्री है और सीधा कैच लॉन्ग अप बाउंड्री पर। गुरुशन को मिलती हुई सफलता। 68 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट पर। 87 का टारगेट सामने शिव मराठा नावेलिम क्रिकेट टीम के सामने। बढ़िया शुरुआत की थी बल्लेबाजी में, खास करके अविनाश गावस ने आक्रामक शुरुआत की थी और उसके बाद साहिल ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। लेकिन उसके बाद समर्थ गावस और लगातार 2 विकेट, एक रनआउट के साथ एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर कैच। विकेट नंबर 4 वापस। 68 रन 4 विकेट पर और कल्पेश का साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। अविनाश नावेलकर जो और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। जो टीम जीतेगी वो मुकाबला करेगी रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम के साथ। जो आने वाला मैच होगा, अगला मैच होगा, पर गुरुशंत अपने बॉलिंग मार्ग पर। 68 रन टोटल स्कोर, 68, लॉस ऑफ 4 विकेट। फुल टॉस गेंद, ताकत भरा शॉट, एक्स्ट्रा और बाउंड्री पर धरे से सोरनेकर। बहुत ही कमाल की फील्डिंग, लंबी दौड़ लगाई और उसका हुआ 68 रन 5 विकेट पर, 68 लॉस ऑफ 5 विकेट। इस ओवर में गुरुशन सफलता दिलाते हुए। फुल टॉस गेंद थी लेकिन प्लेसमेंट बढ़िया नहीं रहा, ताकत नहीं सही लगी और नरेश असनरेकर को दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही सुंदर फील्डिंग, अच्छा कैच। सामने कल्पेश गावस गुरुशन की गेंदबाजी का सामना करते हुए। बाहरी किनारा लगा, गेंद हवा में निकली, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर। और जब तक गेंद को फील्ड करते, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से खेल समाप्त होता हुआ 5 ओवर का और 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर 69, 69 रन। आखिरी ओवर का खेल बाकी 6 गेंदों का और 18 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। शिव मराठा नावेलिम क्रिकेट टीम को जो जीतेगा वो मुकाबला करेगा प्रतीक रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम के साथ, जो आने वाला और एक बड़ा मैच होगा इस मैदान पर। लेकिन उससे पहले देखना होगा 18 रन 6 गेंदों में बनाती है या उससे रोकती है गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम। छह गेंदों का खेल, 18 रन। मैच के जीतने के लिए सामने कल्पेश गावस, एक बहुत ही शानदार गेंदबाजी, फिरकी गेंदबाजी अपने टीम के लिए। अब जिम्मेदारी आ चुके मैच को जीतने की
और सामने अनुभवी खिलाड़ी नरेश असरोडेकर जो गेंदबाजी के मोर्चे पर सफल होकर खेलना चाहते थे। गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। शुरुआत बढ़िया होती हुई नरेश असोंडेकर की। 5 गेंदों का सिर्फ खेल बाकी आखिरी ओवर का, और 5 गेंदों में 2 अभी भी बड़े शॉट अगर लगाने में सफल रहे कल्पेश गावस तो इस मैच में बहुत ही शानदार मजा आ जाएगा। कम बैक होगा शिव मराठा नावेलिम क्रिकेट टीम का। मिस टाइम कर बैठे, मौका रहेगा विकेट कीपर गेंद के नीचे उस कैच को पकड़ते हुए मतीन खान और कल्पेश गावस, और एक विकेट खोते हुए शिव मराठा नावेलिम क्रिकेट टीम डीजे। और पेस गेंद, इस बार बड़ा शॉट देखने होगा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे। सफलता मिलती हुई नरेश असोंडेकर को, और एक विकेट खोते हुए शिव मराठा नावेलिम क्रिकेट टीम। इस आखिरी ओवर का खेल जो कि चलता हुआ, और लगातार एक के बाद एक बल्लेबाज वापस निकलते हुए। पहले शुरू में 3 ओवर में बहुत ही मजबूत स्थिति में थी शिव मराठा नावेलिम क्रिकेट टीम। लग रहा था इस मैच को समाप्त कर देगी। जब बल्लेबाजी हो रही थी साहिल गावस के, अविनाश गावस के मैदान पर, तब मैच आसान लग रहा था। लेकिन उसके बाद समर्थ गावस आउट होने के बाद एक के बाद एक विकेट खो रही है मैदान पर शिव मराठा नावेलिम क्रिकेट टीम। और एक नए बल्लेबाज कदम बढ़ाते हुए मैदान पर, पद्मनाम। बोल्ड हुए उस गेंद पर, एक यॉर्कर लेन की गेंद नरेश असोंडेकर की, और एक विकेट खोते हुए अब काफी मुश्किल। पहली हैट्रिक मुकम्मल कर चुके हैं नरेश असोंडेकर गोमटेश्वर बड़गांव क्रिकेट टीम की ओर से। आज का पहला दिन और प्रतीक पहले दिन में एक हैट्रिक मुकम्मल करते हुए गेंदबाज, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला,
अपने फॉलो थ्रू में, और इसी के साथ सही निशाना नॉन स्ट्राइकर है इन पर, और एक विकेट इसी के साथ मिलती हुई गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम को। के साथ हैट्रिक मुकम्मल की नरेश असुरनेकर ने, उससे पहले गुरुचंद ने बहुत ही शानदार ओवर किया, 2 विकेट चटकाए गुरुचंद ने, और शुरू में शानदार शुरुआत भी हुई थी शिव मराठा क्रिकेट टीम की ओर से। तब मैच जब अच्छे आधे स्कोर को बना दिया था तब लग रहा था आसान सा मुकाबला होगा, लेकिन उसके बाद कमबैक किया, बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी के साथ गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम ने, और नरेश असोंडेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर समाप्ति की और इस ओवर में बोल्ड हुए, और एक सफलता मिलती हुई नरेश असोंडेकर को। इस गेंद पर 4 विकेट चटकाए इस ओवर, 4 विकेट हासिल करते हुए नरेश असोंडेकर